morning, ma'am. Good morning. Ma'am, Namaste. my name is Naresh Bhavsar, BTP न्यूज़ चैनल. आपसे ये जानकारी चाहते हैं हम लोग. पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. My name is Dr. Parin Somani. I am an independent academic scholar, international motivational speaker, writer, author, banker, humanitarian and philanthropist. ओके, वेरी गुड. आप जो सोशल वर्क कर रही हैं, आप इंडिया बेस पे कैसे करना चाह रही हैं और वर्ल्ड लेवल पे क्या करना चाह रही हैं? आप उदयपुर भी आई हैं, किस पर्पज से? जैसे नहीं यहाँ भी सोशल वर्क के हिसाब से इंडिया में क्या प्रमोट करना चाह रही हैं? ओके, पहले मेरे दो मोटिव है. जैसे आपने मुझे पूछा कि आपका क्या बधाई है, क्या आपका है मकसद. मेरे दो मोटिव. फर्स्ट मोटिव, आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी at large. So I have set up my motive when I had a turning point at the age of 40 when I was attacked with the 2 attacks of aggressive cancer and a vision loss. तो तब से हमने सोचा कि हमको मानव सेवा करना है. मानव सेवा के लिए हमने दो हमारे ध्येय रखे हैं. 2 objectives. Number 1, I want to help the mankind until my last breath. That's the number 1. And number 2, I want to do it, but I can't do it myself. So with working with the positive, with working together, I want to make a positive global change. हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हमको NGOs, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल और हम सब लोग को साथ में मिलकर हम करना चाहते हैं. जो हम इंडिया में क्या करना चाहते हैं कि हम 3 फील्ड्स में काम करते हैं. फर्स्ट वन, आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, in the field of women empowerment and in the field of youth development. हम बाहर का भी हमारा personal भी हम like because I'm a banker and I'm an academician, so I do my working on that area as well. But my main 3 areas are the key areas to promote on the social work. अभी आप वर्ल्ड की जब भी बात करते हो तो yes, I want to help in India, but I just don't want to limit myself that to work only in the India, but I work on an international base. So I'm connected to the Florida University, Croatia University, Spain University, Toronto University. So I'm connected to many universities around the world, in the UK as well, in UCL University, King's College, Cambridge University. So there also I am also having my contribution by delivering my papers, by doing my presentation on the international conferences. So I'm connected to many universities, and if I'm talking about the international level, I do have my organization called London Organization of Skill Development Limited, and I'm a director for that organization, where I want to bring everybody around the world, not just for the UK people, not just for the India, but I want to bring everybody, India, Africa, Pakistan, Australia, Canada, UK, or any third world like Mexico, every countries, I want to bring it together on the platform of the education, and I want to help them on the skill development, and I want to help the women around the world how they can help and how they can support. Like when you're talking about the international and India के लिए जो आप बता रहे थे, उसके लिए मैं छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करूँ कि आई एम बीन हेल्पिंग इन द वुमेन एम्पावरमेंट इन राजकोट कोला लाइफ प्रोजेक्ट इंडिया. सो वहाँ भी उन लेडीज़ लोगों को हम ट्रेनिंग के द्वारा हम मदद करते हैं. और जयपुर में भी एक है चंद्रकला ट्रस्ट, जहाँ हमें उसके भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है. तो वहाँ भी हम जो जयपुर में जो लेडीज़ जो गूंथना करती है और जो कुछ बनाती है कपड़े और लाइक ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक हैंड बैग्स एंड पर्सेस एंड like a laptop bags, and we are promoting them to do that, and then we can help them how they can market the stuff. Same goes with life के लिए वहाँ भी उनका भी training है like a hair dressing training और beautician बनाने के लिए. We just people in the life, because I'm an ambassador for the life project India के लिए, because they have a lot of other things as well with the blood donation, they do plantations, so they are also having a lot of activities. So I'm involved with them as well, and I'm a brand ambassador for them. The reason for me to come to Udaipur was the 2 reasons. Number 1, that Chanchal, I came across a lady called Chanchal and Jitendra with the Jindal Foundation and JDCA dance studio people. They wanted to organize a program for the cancer survivor, where they wanted to bring the women and donate their hair and how we can help the cancer patient. So they wanted me to be
to be invited me as a celebrity guest and be part of that event and help them. So that was a part of my deal that I came here. And Rahul Meghwar, who helps in the field of education in the Gnan Jyoti Seva Sanstha. He is the project leader. He's a CEO of that organization, where he wanted me to be there because it was a Teachers' Day, and I am a teacher, I am a professor, I'm a lecturer for the PhD students, and I'm a lecturer, and I train the professors for the faculty programs. FDP के लिए भी हम उसके मेंटो है, तो वो भी हम हमारे लिए एक अच्छी बात थी कि टीचर्स डे आई वाज इनवाइटेड इन उदयपुर, where I can be the part of it. So he invited me in the morning, Rahul ji, as a chief guest in the Gnan Jyoti Seva Sanstha, and in the afternoon I was involved with the cancer survivor event. And in that event, I'll tell you, 130 women have donated their hair, and Very we can good. help them. So that was my purpose of coming and helping them, motivating them. So they invited me as a celebrity guest, and the education people invited me as chief guest. So I think both the events went perfectly well, and I'm so happy that I was part of both the events. And it has given me a lot of satisfaction, because I know I'm a cancer patient, and how important the hair is, and I know what I have to do for my hair when I have lost my hair. So wig is very important. By giving the donation, by donating the hair, I think so all the people who have done it, 130 people, they have done a tremendous excellent job, and I congratulate and best wishes to the JDC Foundation, to the dance studio. आपके बारे में यूनिक जो बताना चाहें, जो आपका इंडियन ब्यूटी के वो कॉन्सेप्ट के जो है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या है? Yeah, with the Indian beauty, I would say I was invited by the media group a couple of years ago that, madam, we would like you to bring the women and help them from the rural areas. So I said, what would you like me to do on that? Because I'm connected to many NGOs, but these people have come up with a different project that said they wanted to do a beauty pageant, and they wanted me to be the part of that event, and they wanted me to motivate them to bring. Because क्या होता है, मिस कैटेगरी में बहुत लेडीज लेती है, पर मिसेस कैटेगरी में बहुत नहीं करना चाहती, because वो शादीशुदा है, because they have a family, they have all restrictions from the in-laws. But it will be surprised that Indian women are more advanced than the UK myself, because I'm coming from a very traditional background where my family are very traditional, and they like to limit things to ourselves only. So while looking at the Indian female, they are well advanced, and the family, the in-laws, they have really supported them very well. So when I did one talk to motivate them, I think I remember there were only 5 ladies, misses, and then with my second talk, 5 ladies, and the rest were miss category. After that, I think I had a crowd of nearly maximum around 500 to 550. Even the organizer were surprised and said, oh my God, how I'm going to shortlist? I can't have a 550 people in my program. So they have to shortlist to 100, and then came up to 50, and then they came up to the 30 as the finalists. So in that way, I have motivated them, and by motivating them, they really liked my work. So they invited me for the second event to be the part of it as a motivational speaker. Again, they called me on the third occasion, and then in the end they decided, मैम मुझे लग रहा है आप खुद ही पार्ट कर लो, और वो करते करते हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुए. Initially I was not very keen, because remember I am an academician, so मेरे को इसमें बहुत रहना मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी. मुझे I don't want to portray myself as a model or going in a field of beauty. But I never realized myself that I can be the part of it and I can win. And in the end, when I joined Mrs. India, I joined Mrs. Queen of India. That was my first pageant in 2021, where I went as a role model, and Filmora Productions were doing it, where I came as a second runner-up for Mrs. Queen of India. और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम सेकंड रनर अप आ सकते, थोड़ी मेहनत करते तो हम फर्स्ट भी आ सकते. अगर करना ही है तो बराबर ही कर सकते हैं. और my daughters have been pioneer support. My husband, my family have supported me to be
the part of this event, and I joined Mrs. India का मुझे opportunity आया, वहाँ भी मैं एक motivational speaker के तौर पर गई थी, and then I turned up to be a role model, and I helped them, and that was a very good incident I would like to share with you, that when I was doing Mrs. India, जब भी jury मैं बैठी थी अपनी एक बॉलीवुड की स्टार अदिति गोवात्री, who is a Bollywood की बड़ी स्टार है, तो she was sitting on a jury panel and I was doing my work, but I came up as a role model and helping the people for Mrs. India के लिए. उनको कुछ मालूम नहीं था. जहाँ मेरा work हुआ, when I did my answers, and she said I have to crown Dr. Parin Somani for Mrs. India 2021. So I become that, and then after that I got the opportunity to become Mrs. Universe International. वहाँ भी हम role model की तरह गए, वहाँ भी हम SK स्टार के साथ हम प्रोडक्शन के साथ हम काम करें, तो वहाँ के भी हम विजेता बने, आई बिकम द विनर, एंड देन आई वाज गिवन अ डील दैट मिसेस इंडिया में अगर जो भी जीतेगा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा मिसेस ग्रेट एशियन 2021 जो लंदन में होता है, तो वहाँ पर हमको जाने का मौका मिला. तो वहाँ भी जूरी के अकॉर्डिंग, नॉट टू द जूरी बट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस के आंसर्स के मुताबिक मिसेस ग्रेट एशियन 2021 के विजेता हम बनी, बिकॉज ऑडियंस हैव शाउटेड द नेम के वी वुड लाइक Dr. Parin Somani to be the winner of Mrs. Great Asian 2021. And after that, the last pageant I've done in India was Mrs. India Global 2021 on the 19th of December last year. So Odisha में हुआ था. This year I was nominated for Mrs. World 2022, and in the end, on 19th of August, I was invited to go to Patiala in Thailand, and there the competition happened, and I had received the crown of Mrs. World 2021, and that was for me to do this, it was like a role model for me, not as a model. So कई मीडिया वाले ने मुझे पूछा है कि मैम आप एक अच्छी सी मॉडल भी हो, तो मैं उनको वही बोलती, प्लीज़ आई डोंट टेल मी आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम अ रोल मॉडल टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज. मुझे ऐसे में कहने जाऊँ तो मुझे रजनीकांत का भी ऑफर आया था. लॉट ऑफ डायरेक्टर्स वर सिटिंग इन द जूरी पैनल में, वो भी मुझे स्ट्रेट अवे इनवाइट करे कि मैडम वी वुड लाइक टू मेक अ मूवी विथ यू, एंड दे वांटेड टू मेक अ मूवी with a hero like रजनीकांत and other big heroes. तो मैंने उनको वही बोला कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर हम ब्यूटी में चले जाएंगे तो हम हमारे खुद का ही ध्यान रखेंगे, हम समाज का क्या ध्यान रखेंगे. हमको कमिटमेंट है कि आई वांट टू गिव माय लाइफ टू द सोसाइटी, सो आई वांट टू help them. So I've written 500 quotes on it, like you saw my one quote that I want to help the mankind until my last breath. This is one of my quote, and that is my objective, but still I've written 19 books as well. So अभी हमारा लास्ट बुक 15th of August को हमारा नंबर 19 बुक का लॉन्च हुआ, and that book was launched, that was amazing experience I had it. That book was launched in Pondicherry with the hand of the CM, and वहाँ की लेडी गवर्नर है तमन्ना राजन, she's the lady governor. So she did my launching the book with the speaker was there, Selim, he was the speaker, and there was a home minister from Pondicherry, he was there as well. So it was really nice experience. मैम अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए एक लाया हूँ या बताना चाह रहा हूँ आपको, उस पर हम लोग आपके साथ में वर्क करना चाहते हैं. उसके लिए हम लोग एक ओम सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है मैम. उसमें हम लोग भगवत गीता हिंदी इंग्लिश और हमारा हिंदी में स्टार्ट हो चुका है. उसको अदर ऑल इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस उसमें हम लोग अलग अलग करेंगे, उसको सारा करेंगे. हम लोग ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के ऊपर आप क्या वर्क कर सकती हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, हम लोग वो सुनना चाहते हैं आपसे आज. यानी एक इंडियन लेडी हैं आप, और सनातन धर्म में जो हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कार वगैरह जो होते हैं, उसके रिगार्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए बताइए थोड़ा सा. पहले तो मैं आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन. मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब सेम है. सनातन धर्म इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द मैसेज टू द सोसाइटी कि तुम धर्म से
उतना धर्म से बोलो नहीं कि हम ये धर्म वाले, आप वो धर्म वाले, हमारे अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, स्पेशली इंडिया में बहुत कुछ होता है. सो आई डोंट वांट टू मेक वन धर्म एज अ इंडिविजुअल पर्सन फॉर एनीवन. आई वुड से वी नीड अ पीस. पीस इज़ द बेस्ट थिंग. अगर आप में पीस है, हमारे में पीस है, सब में पीस है, तो देर विल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, देर वोंट बी एनी इश्यूज. बट अगर सनातन धर्म की बात करते तो आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. फॉर अस एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सबको एक मानवता की सेवा करना है. एक मानवता हमारा धर्म है. तो मुझे मालूम नहीं, हम नहीं. लोग ये चाहते हैं कि सनातन धर्म जो बच्चों में सिखाया जाए. आज क्या होता है, जैसे किसी और समुदाय का ले लें हम, उनको क्या चाइल्डहुड से चाइल्ड लाइफ से उनको सिखाना स्टार्ट होता है. अभी आज हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता. हाँ हाँ, तो करना चाहिए. उसको कैसे प्रमोट करना चाहिए. तो आई थिंक लाइक अभी देखते हो कि अभी क्रिश्चियन की मदर की बात करो, व्हेन स्टडिंग इन सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेजेस, तो उस शुरुआत वो जीसस के प्रेयर से करेंगे. अगर आप मुस्लिम में जाते हो तो वो मौलाना क्या करता है, ही डज इट विथ हिज कुरानिक आयत, सूरह फातिहा. अगर आप गुरुद्वारा में जाते हो तो वो भी अपने गुरु नानक जी, वो भी उनके प्रस्थान करते हैं उनके रिलीजियस प्रेयर से. सो आई वुड से कि हमको भी एक आरती से कि हमारा जो हमको जो प्रचार करना है, हमारे बच्चों को जो संस्कार देना है, वो बहुत ज़रूरी है. तो हम एक सनातन धर्म को आगे करने के लिए हमको एक प्रेयर एवरी मॉर्निंग शुरुआत करना चाहिए. कोई भी बच्चा हो. अभी देखो क्या होता है कि जब मदर के स्कूल में सेंट जेवियर्स में जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदू है तो नहीं करने वाला, मुस्लिम है तो नहीं करेगा, ओनली क्रिश्चियन विल. इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीबडी विल डू दैट. सो वी शुड मेक इट अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन कि वी शुड प्रमोट द सनातन धर्म एंड वी शुड मेक श्योर कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट. अभी हम ग्वालियर में गए थे और हम एक गौशाला में गए थे, तो हम महाराज को मिले थे. तो बिलीव मी, वो महाराज हमको वही बोल रहे थे कि कितनी 6500 वो काव का सेवन कर रहे थे. और वहाँ जाकर हमने बहुत कुछ उनसे वीडियो बनाई, बात करी, मीडिया बाइट्स दिए. तो वो मुझे वही कहना चाहते थे कि कितनी मासूम गायें हैं, सब उनको काट कर खा रहे हैं. कितना अपने हमारे लिए बहुत दुख की बात है. तो हमको ये चीज़ लाना है कि हम काव को क्यों काटते हैं, गाय को वाई आर वी स्लॉटरिंग. वी नीड टू लुक आफ्टर देम. उनमें भी जीव है, उनमें उसको भी लाइफ है जैसा हमारा लाइफ है. हमको कोई काटेगा तो हाउ वुड वी फील. तो हमको वो चीज़ लेना है कि हम गाय को हमारी माता समझे, उसका सेवन करें और हमारे धर्म को, जैसे मैटर वेदर या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी धर्म हो, बट आप आपके धर्म को छोड़कर एक मानव बन जाओ, एक राइट गुड ह्यूमन बीइंग बनो. और वो मैसेज मैं कहना चाहती हूँ. और मैं एक ऑन द लाइन ऑफ द लाइन में एक मैसेज हम all the people in the world में कहना चाहती हूँ कि in this pandemic we all have gone through plenty of challenges, but the world is upside down. We want to bring it together. We want to be part of the wider solution, but not the problem. How can we do that? Number one, we need to be positive. जब भी हम पॉजिटिव ऑरा से रहते हैं तो हमारी जो गंदगी होती है ना, वो गंदगी बाहर आ जाती है और गंदगी वाले लोग से हम दूर हट जाते हैं. और हमारे में जो सच्चाई होती है ना, वो ऑलवेज कम्स आउट. बिकॉज एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट क्या होता है, वो लोही चुम्बक से चिपक जाता है. तो इफ़ यू आर पॉजिटिव यू विल ऑलवेज फाइंड अ राइट पीपल. मैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर. यू कैन सी मी कि हमारे 2 अटैक कैंसर के आने के बाद भी हम वैसा ही सोचते हैं कि हमारे एवरी डे इज़ अ लास्ट डे फॉर मी टू लिव. जब भी हम सोते हैं तो सोचते हैं कल हम उठेंगे कि नहीं, पहले काम कर लेते हैं जो बाकी करना है जितना. इसीलिए हम पूरी रात जग कर काम ही करते हैं. आप 2 बजे मुझे ऑनलाइन देख सकते हो, 4 बजे ऑनलाइन देख सकते हो, 5 बजे ऑनलाइन देख सकते हो. हम 2-3 घंटा ही सोते हैं और हम काम ही कर रहे हैं. बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम ही है, मुझे मेरे बहुत टाइम नहीं है. तो आई वॉन्ट टू डू सो मच. तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी विद द पॉजिटिव पीपल. जो अच्छे लोग से आप जुड़ोगे तो अच्छा ही काम करोगे. दूसरी बात ये है कि तुम अपने सेल्फ को कॉन्फिडेंस में लो, बिलीव करो अपने आप को. जब भी आप बिलीव करोगे तो वर्ल्ड विल बिलीव यू. रिमेंबर रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टुक इयर्स. सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन फुलफिल योर गोल. एंड नंबर 3, बी ऑनेस्ट, बी एथिकल, डोंट चीट एनीवन. किसी का बुरा सोचो नहीं और बुरा करो भी नहीं. और वो करते करते यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लाइफ. एंड व्हेन यू रियलाइज योरसेल्फ कि क्या आपको करना है और क्या आपको अचीव करना है,
उसके अनुसार यू कैन विन द वर्ल्ड। सक्सेस का एक ही मतलब है, एक ही चीज मैं आपको बताऊं कि एक ही लाइन में हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। द वे आई हैव बिकम अ सक्सेसफुल इन माय करियर, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जो बोलते हो वो करो, अदरवाइज मत बोलो, किसी का नाम खराब मत करो, किसी की बात भी बुरी मत करो। बी ऑफ योर वर्ड, and the more honest you are, the more pure you are, the more clean you are, the world will be attracted to you. वेरी गुड, थैंक यू मैम। Thank you, आपसे Papa. मिलकर यानी एक न्यू एक एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि एक मैसेज और आप देंगे युवाओं को, जिससे उनकी मोटिवेशंस बढ़े, यानी उनको जो कार्य करने की कार्य क्षमता बढ़े, उसके लिए आप थोड़ा सा। Okay. मैंने जो भी तीन मैसेज जो दिया है वो सबके लिए था। अभी मैं स्पेशली मैं हमारे यंग बच्चों के लिए मैं क्या दे सकती हूँ। आई थिंक आई वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन टू बी यूनाइटेड, टू वर्क टुगेदर। इफ यू नो समथिंग, हेल्प ईच अदर। सो नंबर वन आई वुड से, पहला एक आपका धैर्य रखो कि हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो उसको आप मदद करो। दूसरी चीज़ मैं वो कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करने के लिए, आप सक्सेस लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी आपको कोई पसंद है, जो भी आपको, यू लाइक टू बी होटल मैनेजमेंट, यू वांट टू बी स्पीकर, यू वांट टू बी एजुकेशनिस्ट, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी प्रोफेसर और यू वांट टू बी इंजीनियर, जो भी आपको बनना है उस पर आप मन लगाकर काम करो। ऐसा नहीं सोचो कि अभी मैं सक्सेस नहीं हुआ ये इंजीनियर बनकर तो छोड़ देना, नहीं, छोड़ना नहीं है। उसके पीछे देखो क्यों सक्सेस आपको नहीं मिला है, उसका रूट कोज देखो। और रिमेंबर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द होप ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमन का एक रूट होता है वो मोटिवेशन। तो यू नीड टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेट करते हो अपने आप को तो किसी को कहने की ज़रूरत है, और यू कैन बिकम अ फैंटास्टिक person in your life and you can achieve your goal. Okay, thank you ma'am. Thanks a lot. Thank you very much to BTP News and Bhaskar today. आपने हमारा इंटरव्यू दिया, बहुत शुक्रिया। ये मैसेज जो आप समाज को देना चाहते हो वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको मैं तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू एंड नमस्ते फ्रॉम डॉक्टर पारिन सोमानी फ्रॉम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। थैंक यू। आज हमने मैम से मिलकर के एक बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी हैं, और यही युवाओं को भी हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अपने सेल्फ के रेस्पेक्ट को एक मोटिवेट करें और खुद के बिहाव पर आगे बढ़ें। यानी एक समाज सेवा के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लोगों को भी जानकारी मिलेगी, लोगों को भी सेवा का कार्य मिलेगा, और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। इंडिया आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। थैंक्स लॉट, थैंक यू। शिव सत्य सना